ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाता हूँ रियलिटी ऑफ H1B फ्रॉड इन अमेरिका। तो एक वीडियो बहुत चल रही है आजकल इंटरनेट पे, बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई पड़ी है, जिसमें दिखाया है कि एक बंदी एक न्यूज़ चैनल की होस्ट है जिसका नाम है सारा गोंजालेस। वो निकली लाइक ना एक्सप्लोर करने कि सच में कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं H1B वीज़ा सिस्टम अमेरिका में। तो दो लोगों के घर पे जाके उसने लाइक काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेट किया है। तो उसकी रियलिटी के बारे में बात करता हूँ। कई चीज़ें सच हैं, कई चीज़ें गलत हैं। इस वीडियो में आपको बताता हूँ क्या है। ऑलराइट, सबसे पहले शुरू करते हैं। ये बंदी कौन है? बंदी है सारा गोंजालेस। शी इज़ होस्ट ऑफ सारा गोंजालेस अनफिल्टर्ड, जो कि ब्लेज टीवी इस बेसिकली न्यूज़ चैनल है, उस पर आती है ये बंदी। There's a whole new problem that it turns out is taking tens of thousands of jobs away from Americans and changing our communities forever that you probably haven't even thought of. I'm talking about H-1B visas. See, it's not just illegal immigration that's the problem. It's actually the legal immigration system. People are using it, exploiting it, and rigging the game in their favor. All right, we're heading over to a company called 3B's Technologies. Now, there were actually 27 H-1B visas approved in 2022 through 2025 for this particular company. The jobs include a software developer, software engineer, IT project manager. So I'm thinking like very high-tech hub for 3B's Technologies. Let's see what we find out. ऑलराइट, थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो 3B's टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों पड़ी है ये बंदी? तो एक्चुअली एक यहाँ पर एक बंदी और है, केली कैम्पबेल। वो ना आजकल थोड़ा वो भी H1B वीज़ा सिस्टम के फ्रॉड को एक्सपोज कर रही है। उसने अपनी वीडियो में, अपनी रील में इस कंपनी का नाम लिया था और वो रील थोड़ी वायरल हुई। इसलिए ये बंदी इस कंपनी को लाइक इन्वेस्टिगेट करने निकली है कि एक्चुअल में कंपनी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। देखते हैं आगे। Are we sure? Do we have the right address here? This is 27 H-1B visas for this location, and it's a residential home. Okay, 130 Darbon Lane, Irving, Texas, 75039. This is the address that's on here, so would have 27 H-1Bs. Let's see. All right. Okay, the doorbell's broken. How are you gonna? Looks like they've boarded up the window. Hello? I'm looking for 3Bs. Hello? So very strange. 3B's Technologies is at a house, as it turns out, and the Ring doorbell's broken, so I can't even press it. They're probably watching me right now because they've got security cameras all over the place. No one at the door. No sign of life for the 27 H-1B workers at 3B's Technologies. तो ये बंदी ढूंढने आई 3B's टेक्नोलॉजी को, जो कि बिजनेस होना चाहिए था, पर ये निकला एक रेजिडेंशियल हाउस। तो आई नो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबके दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि रेजिडेंशियल घर से कोई बिजनेस कर सकता है क्या बंदा? यस, इट्स लीगल। तो आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, नीचे आप देख रहे हो, इसमें लिखा है कि येस यू कैन एब्सोल्युटली रन अ बिजनेस फ्रॉम होम। हाँ, थोड़े से लॉज वगैरह डिफरेंट होंगे, HOA की वो लगेगी अप्रूवल, इंश्योरेंस वगैरह डिफरेंट होगी। यू कैन डेफिनेटली रन अ बिजनेस फ्रॉम होम। हाँ, ऑब्वियसली वो ढूंढने निकली 27 लोगों को इस घर पे, वो नहीं मिले इसे। आगे देखते हैं। So we started looking into this issue because we saw a bunch of chatter happening online about H-1B visas and the scam that was happening. And there was a lot of information that was misplaced in these videos, or just some things that they got a little bit wrong. So we decided to ask the neighbors what they've seen. Hi, how are you? Yes, ma'am. I'm good. I just had a quick question for you. Do you know who lives at the house next door? Next door? Yeah. I know the owner, yes. You do? Uh-huh. Or do they actually live in the home? I don't know about that. Okay. Yeah. I was just trying to find out more information about the company that they have. Oh, okay. I don't know. Okay. I'm sorry. I know who live there. I know the So the family, but I don't know their. I see. So there's a family who lives there. Yes, yes. Uh-huh. Okay. Yes. All right. Do you ever see any like workers coming in and out? No. None. Just a family? Yeah. We're just trying to find out more about some of the companies that are bringing in a bunch of H-1B visa workers. Okay. And yeah, so don't I was know just anything about that. okay. Okay. I just know the family live there. Yeah. He's my neighbor, Yeah. but I don't know what he's working for. Okay. I don't know what is the company. I don't know anything.
And do you ever see like a bunch? Is there a lot of traffic coming in and out of there? No. Okay. They pretty much keep to themselves. I think that I just know the boys, the play around. Okay. Oh, I see. So they have young boys. Yeah, just family. I That's all see. know. I see. Just a family Sorry that for lives not being there. honest. No. That was actually very helpful. I appreciate you answering. So, ma'am, just really quick. I'm not selling anything. I literally just have a question for you. Please leave. Thank you. I was just asking if you had ever met the person who lives here. I haven't, and I think that, but please leave. Okay, well, I'm trying. Hey, listen, hold on, please. I mean you no harm. I'm not trying to sell anything. I'm literally just trying to expose fraud. I understand. Can you tell me what you've seen? I'm on work calls and I can't deal with it. Can you just tell me what you've seen? I'm on work calls and I can't deal with it right now. Thank you. Okay, is there a better time to come back and speak with you? Not really, because I have a I can be involved. I haven't seen it because Well, you've seen some shady stuff go down then. Well, I mean, what are we talking here? I'll blur your face. I will blur everything. We're just trying to get to the bottom of it. Please, can we just come back? Okay, so this neighbor is obviously terrified to tell me what's going on. She just said multiple different times that she's seen some shady stuff go down and she has a family and she doesn't want to be involved. So whatever is happening here at 130 Darbon Lane for 3B's Technologies really stinks. वीज़ा फ्रॉड कुछ नया नहीं है यहाँ पर अमेरिका में, और जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया, यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ, कंसल्टिंग कंपनियाँ जो होती हैं, बॉडी स्टाफिंग कंपनियाँ जो होती हैं ना, जो बेसिकली बंदे लाती हैं, चीप लेबर पे मिल जाते हैं दूसरी कंट्री से, तो यहाँ पे लाती हैं और वीज़ा का फ्रॉड करती हैं. इट्स नॉट न्यू. मार्जरी ग्रीन टेलर, उसने अपनी वीडियोस में काफ़ी एक्सपोज किया है इस बारे में. एक जो एम्बेसी में काम करती थी इंडिया में, उसने बताया था अपनी वीडियो में कि अपनी स्टोरी में कि इंडिया में कितना वीज़ा अप्रूवल फ्रॉड चलता था. और आज इसकी नेबर भी बोलती है शेडी स्टफ गोइंग ऑन. एग्जैक्टली उसने नहीं बताया, शी डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड. समझा जा सकता है प्राइवेसी रीजंस की वजह से, बट उसने इतना तो हिंट दिया है, देयर वाज सम शेडी स्टफ गोइंग ऑन. Right, I think it's safe to assume that this business is not being run out of the home that we just visited. But when you go to this company's website, it now says, after they've scrubbed the page, that their address is 7300 Lone Star Drive, Suite C200 in Plano, Texas. Even though in certain places on their website, it still says Darbon Lane, which seems kind of odd for like this high-tech, highly skilled workers that they wouldn't even understand how to edit a website properly. So we decided, let's come check out the second address and see what we find. What in the world? So 7300 Lone Star Drive. If 3B's Technologies is anywhere to be found, it's an unfinished building. This has just been sitting here collecting dust, clearly under construction. Not a soul to be found, especially conveniently not the 27 H-1B visa workers that claim to work in this location. It's nothing. This is just nothing. There's nothing here. There's one more level. So let's look at this. There's dust all over the steps. There's clearly construction going on. This is not even a operational building yet. It's under construction. The entire place is under construction. Where is 3B's Technologies? So when you search this specific address, it used to be tied to an old WeWork location. It is now tied to a place called the Legacy Club. That tracks with what we see right here, where it says Legacy Club Plano. Now, what this is, when you go online and look for it, is a members-only social club that is supposed to be available early 2026. They've got the renderings for it right here. This is just supposed to be a social club. I still don't understand why a technology company would put their address as a members-only social club that doesn't even exist yet. Now comes the interesting part. दो चीज़ें बताऊंगा आपको. एक चीज़ में ये सारा की गलती है, एक चीज़ में सारा की गलती नहीं है. और गाइज एक रिमाइंडर, अगर आप आज की वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें. मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा. एक चीज़ में जो सारा की गलती है वो ये है कि उस घर में एक्चुअल में 27 लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है. जो स्टाफिंग कंपनी होती हैं, जो कंसल्टेंसी होती हैं, उनको बस वो बस वीज़ा लगवाते हैं
और जो जो एक्चुअल में वीज़ा होल्डर्स होते हैं, H1B जो वाले लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, दे कैन बी रिमोट, दे कैन बी एट क्लाइंट लोकेशन। तो उनको उस घर में होने की ज़रूरत नहीं थी। तो 27 लोगों को उस घर में होने की ज़रूरत नहीं थी और घर के अंदर बिजनेस चल सकता है, तो हम बात कर ही चुके हैं। दूसरी चीज़ जिसमें सारा सही है वो ये है कि ये कौन सी बिल्डिंग का एड्रेस दे रखा है इन्होंने। वेबसाइट में जो हाई स्किल लेबर है, हाई स्किल लेबर से वेबसाइट्स क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही ढंग से। 2 गलत एड्रेस दिखे हुए हैं, 2 गलत मतलब 2 अलग अलग एड्रेस, और एक एड्रेस ऐसा है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, फ्यूचर में बनेगी बिल्डिंग, उसका एड्रेस ऑलरेडी वेबसाइट पर है जो उनको जो जहाँ पे वो बिलोंग भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो आप समझ सकते हो कि मैं मानता हूँ सारा की जो स्टोरी है, न्यूज़ है, बिल्कुल ट्रू नहीं है, पर बिल्कुल गलत भी नहीं है। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, समथिंग फिशी गोइंग ऑन। A little digging into 3B's technologies and the person who lives in the house and was tied to the visas. His name is Vamsi Krishna Vaginapalli, which, yes, you heard me correctly. I don't make the names, I just read them. And let me tell you, Vaginapalli has some explaining to do because there is a shocking amount of potential fraud that we've just uncovered. But wait, there's more. The plot thickens because our pal, Vaginapalli, actually filed another H-1B at another business called Kriti Infosystems. So you go to the website, and again, I mean, on the surface, it looks like pretty legit. It's got graphics popping up. It's real deal, so it seems. Until you start digging more than like 5 seconds when you quickly realize there's something way off. You start scrolling down and notice there's weird coding errors. About us, there's another weird error, which seems weird for a bunch of software engineers to get the coding wrong on a website. पॉइंट तो सही है भाई, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर वीडियो बना रहा हूँ गाइस आज की, पर सारा का पॉइंट बिल्कुल सही है कि हाई स्किल लेबर से वेबसाइट क्यों नहीं मेंटेन हो पा रही। मतलब कोडिंग एरर, सीरियसली। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी खुद की वेबसाइट ऐसी है तो क्या सर्विस देंगे आगे लोगों को। Go to the home page and scroll down here. You can actually contact them at their US office in Louisville, Texas, which obviously is supposed to be Louisville, another error. But when you go to the address actually listed on the website here, it takes you to another virtual office where, once again, anyone can just rent out an office and pretend like they have a business. Over in India, if you'd like to contact them, oh, they've just made up a Vaginapalli complex that doesn't exist. I guess this guy's real high on himself. He wants to name complexes after his incredible last name. Looking at the other addresses here, there's a lot of addresses on their website that just straight up don't exist. Look at their UK corporate office. It's a house. Their other London address in Wimbledon, London, goes to some random Indian tax business called TaxLink. And by the way, coincidentally enough, all of their staff members also Indian. Another company our old friend is tied to is H2M Infosystems. Now, keep in mind, this is a tech company, but their website was made in WordPress, which I would find to be extremely strange that all of these high-tech guys can't handle a website that's not WordPress. H2M is apparently an award-winning agency here. Their website also lists a phone number with a Florida area code that doesn't actually go anywhere. The wireless customer you are calling is not available. Doesn't exist. All right, there's the location. Let's view it on the map. Oh, look, another WeWork location. A coincidence, I'm sure, but this raises some serious questions about our visa process and the holes that exist that need to be fixed. Tell me guys, क्या आप लोग सारे के पॉइंट से एग्री नहीं कर रहे? कितने सारे टाइपोस, कितने सारे कोडिंग एरर्स। लुइसविल को उइसविल अपने नाम पे सड़क बना रखी है, वजीनापल्ली जो बना रखी है वो अपने नाम पे सड़क बना रखी है। फेक एड्रेसेस। आप बताओ, न्यूट्रल हो के आप बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा है कुछ बड़ा सा स्कैम चल रहा है, समथिंग फिशी गोइंग ऑन? मैं मानता हूँ सारा की ये गलती है। एवरी एम्प्लॉय डजंट हैव टू बी एट द फिजिकल एड्रेस, वो रिमोट हो सकते हैं, वो क्लाइंट लोकेशन पे हो सकते हैं। बट ये जो सारे जो फ्लैग्स सारा ने दिखाए हैं, जो हाई स्किल लेबर है, हाई टेक पीपल है, उनसे वेबसाइट नहीं मेंटेन हो रही, फेक एड्रेसेस डाल रखे हैं और अपने नाम पे सड़कें बना रखी है। That's something fishy, something shady going on, seriously. Well, you're probably not going to be shocked to hear that 3B's Technologies is not an isolated incident. Here we have Quibbitz Tech Systems, and this company
tech is in the name, so you would think technology, okay? They have filed 13 H-1B visas, and 12 were approved in the year 2025. One was denied. So you would expect that at least 12 people were working in this house right here. Let's see if that's the case. Hi. Hi, are you Hari? Yeah. Hi. I was wondering, I was just looking for more information on Quibbitz technology. Can I call cops? I can't call. Yeah, sure. I would love for the cops to come out here. I just have some questions about the H-1B visa workers that you Can I take pictures? have here. Right now I cannot track anything. If you want, I can talk to my lawyer. Thank you. Okay, so are the workers in here? Are the 12 workers for your company in here? Do they work out of here? No. Okay, so what is Quibbitz then? Qubits? I don't want to talk. Where are the workers? They're supposed to, USCIS says that they're here. No. Yes. No. Well, where are they? They are in my company. I have a company where Where's your company located? somebody is knocking on my door and then they are like threatening me. I'm not threatening you, sir. Please, can you help me? I'm literally asking you a question. 3 Promontory Drive, Great. Frisco, Texas 75003. You're engaging in a conversation with me, sir. Where is your office? It's techsystems.com. You find address. Can you repeat that? I don't understand. If you don't want to talk to me, just close the door. 03 Promontory Drive. Okay. एक चीज़ समझ नहीं आई, वो बंदे ने हरी ने सीधा का सीधा 911 फ़ोन कर दिया। वो बस उसके कंपनी के बारे में पूछ रही थी। 911 फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ उसके लड़ाई वगैरह नहीं कर रही थी, वो बहस नहीं हो रही थी। शी वाज जस्ट आस्किंग तेरी कंपनी का कहाँ पर है, क्या है, राइट, डिटेल्स मांग रही थी। उसने सीधा 911 फ़ोन कर दिया। और ये होता है परफेक्ट एग्जाम्पल चोर की दाढ़ी में तिनका। Clearly very freaked out because all I did was ask one question and then he threatens to call the cops. Starts calling the cops as if I'm doing anything wrong and then accuses me of threatening him because I simply asked where the workers are. Very strange. Does this seem like right here? Is this behavior of an individual who's done nothing wrong and is innocent? Is this type of behavior? Does that seem normal to you that you would go to these lengths and get so defensive if you were engaging in legal good behavior? It seems very, very suspicious to me. As you just heard Hari say, his workers are all at the office. Now, that address can be found, as he just said, on his website, QubitzTechSystems.com. It's an Irving, Texas address, so we went out there to check that out, see if Hari was telling the truth. Now, on the surface, you arrive, it's a nice office building, looks legit, a lot of other businesses there. And there it is, Suite 137. Initially, you think, oh, maybe this is actually checking out. Maybe he's telling the truth, until you look in the window and see that it's just a couple of fold-out tables and a single chair. Pretty cramped working quarters for 12 H-1B workers. I'm not buying it. Where are all the workers? The biggest question I have right now is if we were able to find this with just a little bit of Google searching and follow-up, why hasn't USCIS done anything to combat this? What are they doing? ऑलराइट, तो ये थी वीडियो। ये कह रहे हैं ना USCIS कहाँ है, जब हम व्हेन वी नीड इट कहाँ है, राइट। देखो, इलीगल होता तो USCIS इनको अब तक पकड़ लेती। मे बी इलीगल नहीं है और मे बी इट इज़। अब जब ये वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है, उनकी नज़र में भी आ चुका है, बहुत जल्दी पता लग जाएगा USCIS ने इनको पकड़ा नहीं पकड़ा। अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में विल फाइंड आउट क्या होता है आगे। आपको कुछ कमेंट्स पढ़ाता हूँ और ये अभी पढ़ के ना हंसोगे। ये पहला कमेंट पढ़ो, सारे एक्स ट्विटर से लिए हैं मैंने। कह रहा दैट अ मेजर स्कैम, दिस हैज़ बीन रनिंग फॉर डेकेड्स। तो H1B की बात कर रहा है ये बंदा। विलियम कहता है, सारा प्लीज़ ऑल्सो पॉइंट आउट दैट H1Bs आर नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज। ईच H1B इज सपोज टू गो बैक आफ्टर 6 years, extendable by 1 year. What actual percentage of these people are actually leaving USA at the expiration? कहती है, yes, very important, कि मतलब 6 या मैक्सिमम 7 साल में आपको वापस जाना पड़ता है, पर आर दे रियली गोइंग बैक? ये वाला देखो, ये 3Bs टेक्नोलॉजी का स्क्रीनशॉट डाला है किसी ने।
कह रहे हैं कि उन्होंने अपना अब तो वेबसाइट पे भी एड्रेस चेंज कर दिया और बोल रहे हैं कि वी आर कंसल्टिंग फर्म एंड नो वन वर्क्स एट द एड्रेस। सो या सब लोग क्लाइंट लोकेशन पर है। और ऑब्वियसली कई इंडियन लोगों के कमेंट भी है। ये राज का कमेंट देखो, कहता है व्हाई वुड एनीवन बी वर्किंग फ्रॉम हिज हाउस, दे विल प्रॉब्ली बी ऑल रिमोट और गोइंग टू क्लाइंट लोकेशन। तो ये मैं बोल रहा हूँ सारे की बस यही गलती है कि घर पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि घर पे बिजनेस का एड्रेस है, मिलेंगे नहीं वहाँ पे, क्योंकि दे कैन बी रिमोट, दे कैन बी एट क्लाइंट लोकेशन। बट फिर भी आपको यू गेट द आइडिया कि कितने सारे फेक एड्रेसेस चल रहे हैं, टाइपोज हैं, वेबसाइट मेंटेन नहीं हो रही, वो बंदे का अचानक से डर के एकदम से 911 फ़ोन करना, फिशी नेबर का बोलना समथिंग फिशी गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये सिर्फ एक जगह इन्होंने एक कंपनी को रेड किया है, इन्वेस्टिगेट किया है। आगे तो पता नहीं कि अगर और करेंगे या फिर अगर USCIS अगर सीरियसली कंसिडर करेंगे ना इनको इन्वेस्टिगेट करना, बहुत जल्दी फ्रॉड निकल के आएगा आगे। वीडियो कैसी लगी गाइस बताना कमेंट्स में, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में।